Assalamualaikum. Welcome everyone. I hope you're doing really well. Uh, Today is the last day of the Web Development Bootcamp presented by GDSC UMT. I hope आप लोगों ने 4 के 4 दिन लिए होंगे पिछले जिनमें पहला दिन हमारा था HTML CSS का. सेकंड वाज इंटरैक्टिविटी यूजिंग जावास्क्रिप्ट. अपनी वेबसाइट्स में इंटरैक्टिविटी किस तरह डालनी है. थर्ड वाज React.js. फोर्थ वाज Node.js एंड MongoDB. हमने किस तरह एक API बनानी है और उसको अपने React के प्रोडक्ट के साथ किस तरह इंटीग्रेट करना. और आज हमारा जो होगा वो फाइनल स्टेप होगा जो कि वेबसाइट को कंप्लीट करने के बाद सारा कोड करने के बाद किया जाता है. इट्स गोना बी डिप्लॉयमेंट. नाउ डिप्लॉयमेंट इज़ जस्ट लाइक हम जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं तो ऑब्वियसली मैं काम करता हूँ लोकल होस्ट पे, अपने लोकल सर्वर पे, अपनी लोकल मशीन पे. तो उसको ये कोई और एक्सेस नहीं कर पाएगा. तो हाउ डू आई डिप्लॉय माई वेबसाइट, हाउ डू आई मेक इट सो कि मेरी वेबसाइट दूसरे लोगों के लिए एक्सेसिबल हो. हाउ कैन अदर पीपल एक्सेस इट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. बिकॉज ऑब्वियसली मैंने एक वेबसाइट बनाई है. आई वांट पीपल टू बी एबल टू यूज इट, टू लॉग इन, टू रजिस्टर, टू एक्चुअली roam around the website. तो इट्स नॉट लाइक द ओल्डन डेज. लाइक पुराने दिन नहीं है अब के हम अपने ही मशीन पे जिस तरह मार्क जकरबर्ग ने अपनी उसके उस पे जो मूवी बेस्ड थी सोशल नेटवर्क उसने अपना सर्वर बनाया था अपाची का एक पूरा कंप्यूटर सर्वर इस्तेमाल करके. तो वी नॉट गोना डू दैट. वो पुराने दिन हो गए. अब हमारे लिए एक नया तरीका है डिप्लॉय करने का. आई वुड उसकी टर्म को कहते हैं सर्वरलेस. इट्स कॉल्ड सर्वरलेस बिकॉज हम अपना सर्वर कोई नहीं बना रहे. ठीक है. तो इट्स जस्ट अ फैंसी वर्ड लेकिन इट जस्ट मीन्स डिप्लॉइंग आवर वेबसाइट ऑन अ सर्वर दैट इज नॉट आवर्स. ठीक है. एंड ओके, सो देयर आर टन्स ऑफ डिफरेंट सर्विसेज जो कि प्रोवाइड करती हैं आपको आपकी वेबसाइट डिप्लॉयमेंट की सर्विसेज. देयर इज लाइक इफ आई कैन जस्ट शेयर माय स्क्रीन. ओके, I hope you can see my screen now. There is like AWS, Amazon Web Services. ये बहुत this is very popular in the industry. बहुत सर्विस प्रोवाइडर्स Amazon की सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं फॉर मे बी स्टोरेज. इसके अपने डेटाबेस भी है, इसकी अपनी वेबसाइट डिप्लॉयमेंट भी है, इसके अपने और ऑन द अदर हैंड इज आल्सो गूगल क्लाउड. गूगल क्लाउड की अपनी कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं जो कि सेम थिंग वही क्या कहते हैं जो सर्विसेज अमेजोन प्रोवाइड करता है उन्हीं का एक अल्टरनेटिव. वेरी पॉपुलर ऑप्शन जो कि आजकल बहुत चल रही है. मैं भी अपने प्रोफेशनल और बहुत पर्सनल प्रोडक्ट्स पे इस्तेमाल करता हूँ. दैट इज़ वर्सेल. वर्सेल आपके लिए एक 2 सेकंड में प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज़ कोई ना कोई वेबसाइट डिप्लॉय करने की. तो दीज आर ऑल serverless options because we don't need to make our own server. We can just deploy it online in easier words. So Netlify is also a great alternative to Vercel. आप बस जाओ अपना कोड अपने गिटहब पे डिप्लॉय आगे वो बिल्ड को डॉक्यूमेंट कर देगा और आपकी वेबसाइट एक लिंक पे पेस्ट हो जाएगी. जैसे मैं अगर अपना पोर्टफोलियो दिखाऊं, माइन इज डिप्लॉयड ऑन गिटहब. ये आप देख रहे हो गिटहब पे डिप्लॉयड है. और आज तो आपको भी इसी तरह का एक लिंक नजर आएगा. तो हाउ डू वी डिप्लॉय ऑन गिटहब.
अब ऑब्वियसली डिप्लॉय करने के लिए हमें एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो उससे पहले वी जस्ट मेक अ रिपॉजिटरी। I'll just go into create it. There is one website रखते हो डॉट गिट आई पिछली क्लास में कोई कराया हो। इफ़ यू डोंट नो, गिटहब इज़ जस्ट ए प्लेटफॉर्म, वेब प्लेटफॉर्म जहाँ पे अपना कोड आप क्या कहते हैं ऑनलाइन पेस्ट करते हो, स्टोर करते हो फॉर अदर पीपल टू एक्चुअली यूज दैट कोड, सी दैट कोड और कोलैबोरेट विद योर टीममेट्स। तो आपको ये वर्जन कंट्रोल बेसिकली प्रोवाइड करता है। अगर मेरे कोड के डिफरेंट वर्जन हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल मेरे कोड का वर्जन अभी लेटेस्ट 1.2 है, तो मैं कोई ना कोई अपडेट करता हूँ और उसका वर्जन 1.3 करता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1.3 पे कोई ना कोई बग आ जाता है, तो आई नीड टू गो बैक। अब गिटहब मुझे सर्विस प्रोवाइड करता है कि ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि मैं 1.3 से 1.2 पे वापस आ जाऊँ, ठीक है। तो गिटहब इज बेसिकली अ वर्जन कंट्रोल, दिस इज कॉल्ड अ वर्जन कंट्रोल। तो अगर मेरी वेबसाइट का वर्जन 1.3 पे कोई इशू आ रहा है, आई कैन जस्ट रोल इट बैक टू 1.2। तो लेट्स डू द सेम थिंग, principal.github.io, be sure to make the spellings right, नहीं करोगे तो इशू हो सकता है, you need to make a new repo and we can just leave the rest of it as it is, maybe add readme, we'll just create a repository। अब यहाँ पे हमारी एक empty repository बन गई है, तो we're just gonna do, let's just say let's clone it, let's just clone it। I'll just do git clone, I'll just paste it over here। अच्छा, what the command I just ran was git clone। clone का मतलब होता है कॉपी करना। तो git मेरा अपना एक गिट का ये CLI टूल है, कमांड प्रॉम्प्ट आप इस्तेमाल करते हो, जो मैंने खोला वो भी कमांड प्रॉम्प्ट है। रिपो का लिंक जो कि मैंने यहाँ से उठाया, HTTPS पे ये लिंक। तो दिस इज क्लोन्स द रिपो फॉर मी नाउ। अगर मैं अपने डायरेक्टरी खोलूँ तो आई कैन सी my repo being cloned here, repo cloned here, so I can just cd into that। now I can see empty है, readme बस नजर आ रही है मुझे। मैं यहाँ पे कोड खोलता हूँ, अपना VS कोड खोल लेता हूँ। वैसे अगर मैं खोलूँ ना अपनी वेबसाइट, आई थिंक यहाँ पे शायद डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहा हूँ, इट मीन्स हमारी वेबसाइट अपलोड हो चुकी है। अगर मैं जाऊँ इस लिंक पे, इफ आई गो इनटू सेटिंग्स एंड आई जस्ट गो इनटू पेजेस, ये मुझे बता देगा योर साइट इज लाइव एट दिस लिंक, https principal.github.io। तो इफ आई जस्ट क्लिक ऑन इट, ये मुझे रीडायरेक्टरी दिखा रहा है जो उसके अंदर कॉन्टेंट्स है। तो इट्स नॉट शोइंग मी द एक्चुअल फाइल्स इन देयर, ये मुझे सिर्फ ये लिंक दिखा रहा है। अब जब मैं इस में के index.html, मैं यहाँ just to show some to how to deploy the website using GitHub pages by GDSC UMT। Now if I save it, I need to push the code to GitHub। अब उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं I'll just run a command called status। ये मुझे बता देगा कि अच्छा मैंने कौन सी फाइल्स डाली हैं। अब अनट्रैक्ड फाइल नजर आ रही है मुझे, दिस शोज मी कि हाँ ये फाइल मेरी अभी एंटर नहीं हुई, ये मैंने फाइल पुश नहीं की आगे, ऑनलाइन नहीं डाली, अभी सिर्फ ये मेरे उस पे है, लोकल मशीन पे, मेरे अपने कंप्यूटर पे। सो देयर आर टू कमांड्स आई विल रन, गेट ऐड डॉट बेसिकली एड्स एवरी सिंगल फाइल जो कि नई मैंने इसके अंदर क्रिएट की थी। सो दिस विल जस्ट confirm the new files जो कि मैंने क्रिएट की थी। नाउ आई विल डू git commit am। This is a lot easier if you use the graphical user interface,
like if I go to GitHub desktop. So this is not a CLI tool. This is a whole software, like desktop application. Code push or pull कर सकते हो. You can check your commits. It's the same thing as this, लेकिन it's just a desktop application. आपको commands नहीं याद करने पड़ते. आपके पास हर चीज़ का UI provided होता है. So I just find the CLI tool to be a bit more faster. So I just use the CLI. तो we'll just do git commit -am, which means कि हमने एक message डालना है इसमें. तो I'll just follow it up by a message. Added index.html बताने के लिए अपने आप को या कोई और बंदा कोई डेवलपर्स को क्या कहते हैं कमिट को रीड करे तो उसको नजर आ जाए कि अच्छा इस कमिट में हुआ क्या है. ठीक है, तो आज उससे एडिट इंडेक्स html उसको बताने के लिए. done that. Now I'll just do git push. Now if I do git push, because okay, why did it? Guess we're gonna okay. Okay, let me just clear this up. One second. I think मेरे कोई cloning में issue आया होगा तो मैं उसको बस clear कर दूँ. Okay, so the issue is I need to enter my username. अगर आपने CLI इस्तेमाल कर रहे हो ना आप, तो one thing you need to do is let me share my screen. Okay, one thing you need to do is because मैं एक different account इस्तेमाल कर रहा हूँ, I need to log into my CLI. Get config user dot name cringe belong. This will set my username to this thing. So I'll also do the same thing, लेकिन इस बार मैं अपना email पे set करूँगा इसको, which is my university email. Now if I just do push again, it should push. Okay, account का issue देना है मुझे. Let me just make it on my own account. एक second. Sadan, you here? Sadan? Hello, am I audible? Yep, you're audible. बाकी explain कर दूँ मैं बस एक issue fix कर दूँ. सॉरी आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है दोबारा बताना मुझे ज़रा. I'm saying आपने जो explain करना है
आप कर दो, मैं बस 1 सेकंड में ये इशू फिक्स कर दूँ, ठीक है? श्योर, श्योर, ठीक है। ओके। अच्छा, मीनवाइल बिलाल फिक्सेस द इशू, तो मैंने आप लोगों से शेयर करना था कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द बूट कैंप, और आई होप आप लोगों ने लाइक काफ़ी कुछ सीखा होगा इससे। तो इसको सबसे अच्छा तरीका इसको एवेल्युएट करने का ये है कि बिकॉज़ अब कुछ सेशंस किसी स्टूडेंट ने जॉइन किए, कुछ नहीं किए, तो सबके लिए इसको जस्टिफ़ाई करने के लिए एक तरीका है कि वी डू हैव द अटेंडेंस, लेकिन हमने सोचा है कि वी विल बी गिविंग यू अ वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट, बिल्कुल बेसिक सा प्रोजेक्ट, सिंपल सा फ्रंट एंड। आपने अपनी मर्ज़ी से फ्रंट एंड बनाना है और उसका सिंपल सा बैकएंड डिप्लॉय करना है, जो हमने सिखाया है उसी में से। एंड देन यू आर गोना लाइक अपलोड इट ऑन गिटहब, और आप हमसे जैसे ही लाइक शेयर करेंगे कि यू हैव अपलोडेड इट ऑन गिटहब, तो फिर विल प्रोवाइड यू द सर्टिफिकेट। तो इट इज़ अ वेरी गुड वे टू वैलिडेट कि आपने स्किल कर लिया, बिकॉज वी GDSC UMT itself आर एन इंस्टीट्यूट, और फिर और उससे आपका स्किल भी वैलिडेट हो जाएगा। फिर विल शेयर योर सर्टिफिकेट्स इन वट एवर यू हैव डन ऑनलाइन। तो आई होप कि दिस मेथड वर्क्स फॉर यू। इससे सबके लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है, और इसके साथ-साथ यू विल गेट अ लॉट टू लर्न। जब आप खुद से इम्प्लीमेंट करोगे, आपके ऊपर एक प्रेशर होगा क्योंकि आपने टाइम यहाँ स्पेंड किया है, और क्योंकि आपने टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है, तो आपके स्किल वैलिडेट हो जाएगा कि आपको ये चीज़ एक्चुअली में आती है। ये नहीं कि आपने सिर्फ सेशन एंड किया, और दिस वे आप अकाउंटेबल भी हो हमारे पास कि आप वो काम करोगे। तो इट्स जस्ट लाइक अ प्रोजेक्ट वी हैव गिवन यू। आप कोई भी लाइक ऐप बना के वो हमें दोगे, उस ऐप की रिक्वायरमेंट मैं आपसे शेयर कर दूँगा, और बिल्कुल बेसिक रखेंगे उसे ताकि सब कर सकें। तो उससे फ़ायदा ये होगा, आपके पोर्टफोलियो में एक चीज़ ऐड हो जाएगी, जिससे लाइक आपको समझ आ जाएगा कि व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट। और बिलाल, देयर इज़ अ सजेशन इन द चैट व्हिच सेज़ कि डोंट क्रिएट अ रीडमी फाइल व्हाइल क्रिएटिंग रिपॉजिटरी, तो फिर इश्यू नहीं आएगा। नहीं, नहीं, इशू एक्चुअली रीडमी का नहीं है, इट्स माय अकाउंट। मेरा एक्चुअली गिटहब के जो CLI टूल है, उस पे मेरा दूसरा अकाउंट लॉग्ड इन है। तो बिकॉज़ मैं गिटहब जो ऑनलाइन है, उस पे डिफरेंट अकाउंट था, तो उसका इशू आ रहा था। वो मैंने फिक्स कर दिया। श्योर। तो डू यू वांट टू कंटिन्यू? यप, ओके, ओके, सो तो बैक टू थैंक यू। ओके, आई होप सदैन ने एक्सप्लेन कर दिया होगा। नाउ आई ran the command git push. I'll just make another change क्योंकि initial push था, तो I had to run this command git push setup string origin master. आपको कमांड्स याद करने की कोई बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने कभी अपने याद नहीं किए कमांड। आपको टूल खुद ही प्रोवाइड करता है अगर आप डेस्कटॉप एनी ऑफ दीज़ कमांड्स डेस्कटॉप आप। तो अगर मैं आई गो इनटू सेटिंग्स, अब आप देखते हो कि मास्टर वाली मेरी ब्रांच में कोड पुश हो गया। आई कैन सी द इंडेक्स HTML, आई कैन सी के इस पे मेरा सारा कोड नज़र आ रहा है। नाउ इफ आई गो इनटू सेटिंग्स एंड आई गो इनटू पेजेस, अब दिस इज़ क्या कहते हैं, योर गिटहब, दिस शोज़ दैट योर गिटहब पेजेस साइट इज़ करंटली बीइंग बिल्ट फ्रॉम द मेन ब्रांच। क्योंकि मेरा मेन कोड इज़ नॉट ऑन माय मेन ब्रांच, इट्स ऑन माय मास्टर ब्रांच, तो आई जस्ट शिफ्ट इट टू मास्टर। इट्स द सेम थिंग। मेरा अकाउंट का इशू था, इससे थोड़ा लंबा काम करना पड़ा, लेकिन अगर आप अपने अकाउंट पे बनाते हो, इट विल बी, यू वोंट हैव टू डू एनी ऑफ दिस, इट विल बी जस्ट लाइक ब्रेड एंड बटर। वो सिंपल काम कर देगा। नाउ जस्ट सेव, आई जस्ट सेव द फाइल, गिटहब पेजेस सोर्स सेव्ड, ये सेव हो गया। एंड नाउ इफ आई गो इनटू मास्टर, I should see it build. The page is building and deployment is also in progress. So this is basically your GitHub actions जो कि कौन अभी एक बिल्ड क्रिएट कर रहा है। एक अगर आपने C++ में कोड किया या C में कोड किया, आपको पता होगा, आप कोड कंपाइल करते हो कंपाइलर को रन करने से। तो बेसिकली दिस इज योर एग्जीक्यूटेबल फाइल जो कि GitHub जनरेट कर रहा है। नाउ आई विल हैव टू रिफ्रेश इट वंस और ट्वाइस, चेक करने के लिए कि ये हुआ कि नहीं। ओके, परफेक्ट। तो अब ये डिप्लॉय हो गया। अगेन टिक एक नज़र आ गया मुझे, इट मीन्स मेरी वेबसाइट डिप्लॉय हो गई है। नाउ इफ आई गो इनटू द सेम लिंक जो
पे मुझे प्रोवाइड किया गया था वो विजिट साइट एंड वॉला अपने मोबाइल पे खोलो अभी लाइक राइट नाउ तो आपको ये वेबसाइट नजर आ जाएगी इफ आई कैन शेयर यू द लिंक सबूर कमांड सी मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कोई इशू नहीं है आई नो गिटहब का CLI कैन बी अ बिट कंफ्यूजिंग हफीजुल्लाह I'm sorry if I'm butchering your name. Yeah, GitHub CLI can be a bit confusing, लेकिन commands are really simple. मैं आपको फिर से explain कर दूंगा. अभी हम थोड़ा बहुत और भी पढ़ेंगे. आज का लेक्चर थोड़ा theoretical होगा as compared to practical, because practical part हमारा complete हो गया. This was it. हमारी वेबसाइट थिंग वो आगे GitHub खुद ही डिडक्ट कर लेगा उसकी फाइल और आपकी वेबसाइट पूरी यहाँ पर नजर आ जाएगी. ठीक है. Now if you go into the link I sent, आपको भी वेबसाइट ये सेम नज़र आ जाएगी. आपको सामने नज़र आ जाएगा वेलकम to how to deploy a website using GitHub Pages by GDSC UMT. Now that we're done with the practical part, now let's just move on to the like theoretical part. मैंने क्या कमांड्स पुश किए. Now if I go back into the terminal, मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ सारा कुछ. Now Git आपको मैंने बताया था it's just a version control system. If I want to control the state of my commands to run, तो I just wanted you guys to know that Docker भी एक चीज़ है. It's a very useful tool and it's a very great asset to have in your skill set. और employers are very impressed when they see कि आपको Docker भी इस्तेमाल करना आता है. तो that is Docker. अगर आपको नहीं समझ आई तो अगेन प्रोग्रामिंग ऐसी ही चीज़ है. आपको पहली बार में मोस्ट लाइकली कुछ समझ नहीं आता. एप्लीकेशन भी करनी पड़ती है इसकी. तो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट कोई इशू नहीं. आई एम हियर. आपके पास ऑनलाइन रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं. डॉकर के बारे में पढ़ें. गिटहब पेजेस के बारे में पढ़ो. फ्रंट एंड डेवलपमेंट बैक टाइम आपको हर एक चीज़ स्लोली स्लोली आपके अपने पेस पे समझ आ जाएगी. तो अगेन दिस is how you deploy a website using GitHub Pages. And yeah, if anybody if anybody has a question, please do ask. Sir, what if we have backend code also inside
साइड। या बैकएंड कोड भी आप डिप्लॉय कर सकते हो गिटहब पे, जिसपे भी आप डिप्लॉय कर सकते हो, भी आप वर्सल पे भी आप डिप्लॉय कर सकते हो। उसका एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है, आपको एक कॉन्फ़िग फाइल बनानी पड़ती है, तो उसका थोड़ा लंबा काम होता है, तो दैट्स व्हाई आई डिडंट एक्सप्लेन इट, क्योंकि और कंफ्यूजिंग हो जाना था आप लोगों के लिए। लेकिन इफ यू गाइस वांट, मैं आपको कम्युनिटी में आपको व्हाट्सएप के जीसी में एक लिंक भेज दूंगा जो कि एक्सप्लेन कर रहा होगा सारा का सारा बैकएंड एंड फ्रंट एंड डिप्लॉयमेंट साइड बाय साइड। ठीक है, साइक्लिक के बारे में बता दें, आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट साइक्लिक।